How important she has been in your life, Asha Bhosle ji. She's like my musical mother. हर स्टेज पे उन्होंने मुझे encourage किया. कभी तो नजर मिलाओ मेरा पहला जो ट्रैक जो मैंने यहाँ पर पेश किया वो आशा जी के साथ duet था. How was it dancing with Govinda? Once that video was released, it went through the roof, and you know the rest is history, as they say. You danced so well. Shamelessly. तूने खुद ही कहा है देता हूँ जो मांगता है, कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में लगा है, अब तो लिफ्ट दे देना. वो एक खुन्नस निकल रही है यार. For God's sake. Try to understand what I'm trying to say. Has the song been used on your wife? वो मेरे मुंह से निकलने से पहले ही वो सब चीजें पूरी हो जाती है. कैमरा ऑफ है अदनान. कैमरा ऑफ है. हाँ आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? I have to say it all the time यार. Yeah. Actually. Oh no, I'm so sorry. पूछो मत यार. एक हाँ तो मैं कह रहा था कि it's like incredible. Supreme. हाय, मैं हूँ अदनान सामी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा. हाय गाइस, नमस्कार, वेलकम टू हंगामा. मैं हूँ उर्मिन आपके साथ. आज के हमारे जो आर्टिस्ट हैं, मैं क्या कहूँ इनके बारे में. यू नो, व्हेन इन डाउट देयर इज अदनान सामी. अंदर से एक आवाज निकलती है, दैट्स राइट. And that's why we love him for all that he has given to the music industry, to us with his music. Adnan, hello, welcome to our special music session. Thank you very much and welcome to my home. I love it. It's a gorgeous house. और मेरी अगर नज़र से आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक खूबसूरत सा एक म्यूजियम यहाँ पर with all your inspirations, if I may say so, आपने बनाया है. तो आपको पता है इस घर में जब मैंने लिया था तो it was a shell. तो मैंने अपने आर्किटेक्ट जो थे, जो इंटीरियर डिजाइनर थे, शक्ति परमार जी, मैंने उनको कहा कि यहाँ पर पियानो होगा. मैंने कहा बाकी सब कुछ आप जो मर्जी आए करें, यहाँ पर पियानो होगा. तो उन्होंने पियानो को इस एंगल पे जो अभी आप देख रहे हैं उसको यहाँ पर रखकर उन्होंने बकाया घर जो था उसको प्लान किया. इसलिए अगर आप देखती हैं ये दीवार भी स्लैंट पे है. वो उसकी वजह ये थी कि मैंने यहाँ पे वो X marks the spot. तो इस पियानो के हिसाब से घर पूरा के इंटीरियर्स भी काफी बने मतलब कि वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक. मतलब कि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई सबसे पहले तो मेरा पहला जो प्यार है वो उसके लिए जगह होनी चाहिए. हमने भी इसलिए सोचा कि आज इतने बड़े घर में हमें यहीं बैठना है. इसलिए मैंने आपके साथ बहस भी नहीं की ना. क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर स्पेशली हम क्यों बैठे हैं. क्योंकि आपसे बातें होने वाली हैं और आपसे थोड़ी मेहनत भी हम कराने वाले हैं. जरूर. There's no such thing as a free meal. So tell us, such a beautiful, gorgeous musical journey. How does it feel? It's strange because मैं ज़्यादा I'm not a very retrospect kind of a person. I don't look back that much. But every now and then, you know, when I'm confronted with a situation where I'm requested to look back, like for example right now, I mean, I will look back at my journey and call it nothing less than a miracle. I mean, it has been one incredible roller coaster ride. God has been very, very kind to me. He's been very protective towards me. You know, I mean, he has taken me out of the most strangest, difficult situations in life, and he has blessed me with the most incredible gifts that I could have or anybody could have imagined. तो मैं अपना ये जो सफ़र है इस पे मैं बहुत ज़्यादा ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ. and I'm very grateful to everybody who has been so loving to me, because you know, I mean, you cannot make this journey and reach here without the love of people and wonderful people like yourself, you know. आप अगर ना सुनते तो मेरा क्या होता है, you know. I mean, an artist is not an artist without the audience. So audience is king. मतलब कि आप चार दीवारी में तानसेन क्यों ना हो, लेकिन चार दीवारी के बाहर अगर आपको कोई जानता नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं हो. बिल्कुल. तो वो प्यार इज्जत जो है वो लोग आपको देते हैं. तो वो जो उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ. हाउ लवली. मैं यही कहूँगी कि एक ज़माना था जहाँ इंडी पॉप म्यूज़िक बहुत लोग पसंद करते आते थे. बहुत सारे एल्बम्स, बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े, एंड देन देयर वाज अ स्टॉर्म ऑफ soulful music that came in the year 2000 with Adnan Sami, and
फ्रॉम द ईयर 2000 टू द ईयर 2022 कितनी सारी चीज़ों से आपको नवाजा गया है. यू आर द फास्टेस्ट पियानो प्लेयर इन द वर्ल्ड. आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. यू आर नोन एज द कंप्लीट म्यूजिशियन. दिस इज अ ग्रेट खिताब. एंड 2020 में जब हम सब पैंडेमिक से लड़ झगड़ रहे थे, उसकी शुरुआत में in the month of Jan, if I'm not mistaken. 2019 ना? 2020. 20. Sorry, yes. आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया. Yes. अच्छा. Okay. Yes. Yes. अंदाजा करें. I mean that was just such a incredible honor. जी. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं. आपको शायद कभी-कभी किसी चीज़ के ऊपर उम्मीद होती है कि भाई मैंने बड़ी मेहनत की है फलानी चीज़ पे. उम्मीद है कि शायद मुझे इस चीज़ पे शायद शाबाशी मिले. लेकिन पद्मश्री जो था वो खिताब, उसके ऊपर मेरा कोई ध्यान ही नहीं था. क्योंकि यू सी पद्मश्री जो है वो सिर्फ एक काम के ऊपर नहीं आपको दिया जाता. you're being awarded for your life and the journey and your contribution over your journey of life. You know? So I mean, I'm grateful to the government of India and the people of India for having recognized that journey and honoring it with this incredible award, because it has been a lot of wonderful moments, but also with a lot of sacrifice. True. मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादा वो इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ कि जी मैंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं. No. I have to do whatever I have to do in order to get the job done. Yeah. You know, and I don't make a fuss about it. You know, and it's amazing that your struggle is personal. It's yours. Exactly. I don't talk about it. But when somebody has the foresight and the ability and the sensitivity to see it and appreciate it and acknowledge you for it, it's something that I'm truly touched and deeply touched by, because it means a lot to me. Wonderful. एक शख्स का मैं नाम लेना चाहूँगी, and please tell us about how important she has been in your life. आशा भोसले जी. She's like my musical mother. I mean, वो तो. Is it true that she introduced you to many artists and then it helped you start off your musical journey? मेरा उनके साथ सबसे पहली मुलाकात जो थी वो I was hardly 10 years old. अच्छा. And I met her in London. And उनको मैंने उस ज़माने में, उस वक्त मैंने उनको अपनी एक कैसेट सुनाई थी जिसमें मैंने कुछ पियानो बजाया था और कुछ मेरी कॉम्पोजिशंस थी. तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि देखो इसमें बहुत खूबसूरती है, अगर तुम इसी तरह से मेहनत करते रहो तो शायद तुम कल एक म्यूजिक कंपोजर बन सको. For me that meant a lot, because I mean Asha ji for me is the queen. I mean she's incredible. और तो मैंने मेहनत की, और जब मेरी जो पहली एल्बम इंडिया में जो रिलीज़ हुई वो उन्हीं के साथ हुई. कभी तो नज़र मिलाओ, मेरा पहला जो ट्रैक जो मैंने यहाँ पर पेश किया वो आशा जी के साथ ड्यूएट था. तो ये चीज़ ना आशा जी प्लान कर सकती थी ना मैं कर सकता था, ये ऊपर वाली की प्लानिंग थी. एंड ही इज़ द बेस्ट प्लानर. सो उन्होंने मुझे हर स्टेज पे उन्होंने मुझे इंकरेज किया. एंड आज भी जब भी मैंने कि आज भी वो मुझे उसी तरह से इंकरेज करती हैं जिस तरह पहले करती थी. तो उनके साथ मेरा रिश्ता जो है वो बिल्कुल एक माँ बेटे वाला है. तो आई लव हर. वो मुझे कई दफ़ा मुझे डांटती भी हैं और बड़ा सख्त डांटती हैं और मैं चुपचाप सुनता भी हूँ, और मैं फिर कहता हूँ कि अच्छा भाई अब अगर आपका गुस्सा ठंडा हो गया तो हम आगे बातें करते हैं. तो पहला जब भी मिलती हैं, अगर थोड़े अरसे बाद मिलती हैं तो पहले 10 मिनट तो मुझे पता है कि मुझे डंडे पड़ने वाले. एंड दैट इज जायज़, माँ का हक होता है. एंड लेकिन उनकी जो खूबसूरती है वो ये है कि वो जो भी है वो सामने है. उनके दिल में जो भी बात होती है वो सामने कह देती है, और फिर जब एक दफा उनके दिल से वो बात निकल जाती है वो फिर ठंडी हो जाती है, शांत हो जाती है. शी इज अडोरेबल, शी इज एब्सोल्युटली अडोरेबल. ऊपर वाले ने ये परफेक्ट प्लानिंग की थी आप दोनों को एक साथ लाने की. अब हम इस गाने को आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे. ओके, श्योर. कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ. जो नहीं कहा है
कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने, कभी तो नजर मिलाओ. Oh my God, I'm truly blessed Thank to you. be here at your beautiful house, sitting right in front of you with this grand. वैसे ही कितना पुराना है ये grand piano? It's about 10 years old. 10 years old. ये मेरा लाडला है. इसको मैं बड़ा प्यार लाड से मैं इसको रखता हूँ. बहुत बहुत खूबसूरत. तो अब एक और ऐसे शख्स की ओर बढ़ते हैं जिनकी पर्सनालिटी आपसे बिल्कुल मैच करती है. और ये जब दोनों पर्सनालिटीज एक साथ हमें पर्दे पर नजर आए, पर्दे पर मतलब हमारे टीवी स्क्रीन पर नजर आए, तो हमने भी कहा कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे. How was it dancing with Govinda? It was fabulous because, you know, I mean, of course, at that point in time, he was absolutely on top of his game, you know. I mean, he was astounding. He was astonishing. He was really, really sort of completely on top of his game. And मेरे दिमाग में एक चीज़ आई because this song was very up-tempo. I just felt that it had that whole Govinda space and, you know, that whole groove, you know, that whole vibe in it. तो मैंने जब उनसे जब बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को सुन के. उन्होंने ऑलरेडी ये गाना सुना हुआ था. And so he liked it very much. I said to him, I said, look, I'm making a video and I would just love for you to just make a guest appearance in it. And he was so sweet, you know. I mean, उन्होंने बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि ज़रूर करते हैं, let's do it. And then, you know, he came at the tail end as a kind of a surprise package, as it were. And he came, he did a quick jig with me, and he left the screen, and it just worked, you know, and that was exactly what I wanted, and the effect and the impact that it had was exactly what, again, I thought that it would create, and people loved it, and of course, मज़े की बात ये है कि the record label at that time was not very keen to release लिफ्ट करा दे. क्योंकि उससे पहले मेरे 2 रोमांटिक गाने बहुत हिट हो चुके थे. एक तो कभी तो नजर मिलाओ था, फिर भीगी भीगी रातों में था. तो उन्होंने कहा कि तीसरा गाना आप जो कर रहे हो वो भी रोमांटिक होना चाहिए. भाई रोमांस चल रहा है आपका तो आप जरा रोमांटिक ही रहो. मैंने कहा नहीं यार ये करते हैं. उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, कहाँ ये बड़े क्लासी रोमांटिक किस्म के गाने और ये एकदम सड़क छाप किस्म का गाना, इसको क्या बात कर रहे हो आप. मैंने कहा देखिए मैं बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि मैं सिर्फ एक तरह के गाने नहीं गाता. मैं बहुत सारे किस्म के गाने गाता हूँ, अलग अलग जॉनर के गाने गाता हूँ. और मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ एक ही तरह के गानों के लिए पहचाना जाऊँ. ये वक्त है मेरे लिए दुनिया को बताने के लिए कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ. तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अब now don't rock the boat unnecessarily, you know. I mean, if it ain't broke, don't fix it, you know. तो मैंने कहा कि नहीं आप प्लीज मेरी बात मानिए, ये प्लीज मुझे करने दें. And with a very heavy heart at that point in time, they didn't really believe in it, but they listened to me, for which I'm grateful. They took a chance. And we made this video. Wow. So, but of course, once that video was released, it went through the roof, and you know, the rest is history, as they say. I mean, it became like an anthem. And we're speaking about a time. मुझे याद है कि अरे वो सुना है कि नहीं गाना? लिफ्ट करा दे कोई गाना है, कुछ लिफ्ट क्या बात करो, कौन सा गाना है? I still remember, you know, and then the popularity started because everybody was like, oh, this is coming on television, you want to watch it, you know, you switching channels, or tab cable TV helped us a lot, and you would wait for this song to come. Oh my God, and you danced so well. Shamelessly. पर क्या इसके बाद आपको एक्टिंग के भी ऑफर्स आने लगे? Yeah, I did, but I was very clear in my head at that time that I didn't want, because you see, वो एक तरह से अगर देखा जाए, वो एक तरह का एक ट्रेंड सा है कि आपने 2-4 हिट क्या कहते हैं गानों के कर लिए, फिर आपको फिल्मों की ऑफर्स आ जाती हैं और आप कूद जाते हो फिल्मों में. तो आई डिडंट वांट टू टेक दैट रोड. आई फेल्ट दैट आई वांटेड टू कंसंट्रेट ऑन म्यूजिक, एंड आई सेड कि अभी पहले एक चीज को ठीक तरह से करो, बाद में
जिंदगी पड़ी हुई है टू सी इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट साइड. तो वो मैंने बहुत अरसे तक मैंने उस बात को कायम रखा until बजरंगी भाईजान. That was the first time and I couldn't say no to Salman. Of course, I mean, of उनके course. साथ एक रिश्ता ऐसा है. तो पूरी फैमिली के साथ बल्कि तो वो एक अलग कहानी थी. लेकिन कहने का मकसद ये था कि at that point in time I did get offers but I didn't do it. पर since हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, in those same years came this film Ajnabi. Right. And the song that came out was Mehbooba Mehbooba. That was my first film song, right? Song, yeah. How did life change after that? Well, I mean, it was honestly speaking, it was incredible because I mean, it's very interesting क्योंकि आप यहाँ पर हमारे यहाँ वो एक बड़ा अजीब सा एक सिलसिला चलता है. आपकी कोई भी चीज़ अगर कोई हिट हो जाती है ना तो वो आपको फिर उसी जॉनर्स में चीज़ें मिलना शुरू कर देती है. अब जब मेरे रोमांटिक गाने पहले हिट हुए तो मुझे रोमांटिक गानों की ऑफर्स आने लगी फिल्मों में. ऐसा लग रहा है कि साइंटिस्ट बैठे फॉर्मूला बन गया. हाँ, वो लिटरली अब देखिए फिल्मों में भी क्या होता है, अचानक एक्शन फिल्म एक हिट हो जाती है, वो कहते हैं जी सब एक्शन फिल्में बनाओ. अभी वो साउथ की फिल्में चल रही तो कहते हैं जी साउथ स्टाइल फिल्में बनाओ. अब कॉमेडीज अचानक चलने शुरू हो जाती है, वो कहते हैं कॉमेडीज बनाओ. So everybody is always looking for that certain formula which actually doesn't exist. True. The only formula that exists is good content. That's it. Great. Regardless of what genre it may be from. But the point of the matter is that जब महबूबा hit हुआ, तो I suddenly started getting a lot of offers to do item songs. Because it was a dance number, and then suddenly another Tera Chehra became a hit, and then suddenly I started getting romantic songs again. So it's अब जब ये कवाली hit हुई भर दो झोली, तो आप यकीन मानो कि मेरे पास इतनी ऑफर्स आई कवालियों की. मैंने कहा यार मैं कवाल नहीं हूँ. I mean I love it, but I'm not going to do it just for the sake of doing it. This one, of course, is a classic, is a colossal hit from the past, and I love it personally. And I did it, but it doesn't mean that I'm going to now sort of jump onto the bandwagon and start doing all of that. I have this small itch. I know that there is Lift Kara De and there's Mehbooba Mehbooba जिसमें बहुत सारे beats हैं. लेकिन अगर आप अगर मूड बने तो मुझे कुछ भी बजा दो. कुछ भी बजा दे. मतलब कौन सा होगा? मेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला. मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे. ऐसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है. मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे. वो जो एक शब्द है जिसका बहुत अच्छा उपयोग किया है वो है खुन्नस, कि कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है. आई लव दैट. यू सी, क्योंकि ये हमारी फितरत में है. ये हमारी फितरत में है कि हम कभी-कभी, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज में देखा होगा कि एक बंदा है एकदम नर्ड जैसा बंदा है, जिसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बंदा कहता है यार इसका तो कुछ भी नहीं बनने वाला, और आप उसको मतलब कि 10-15 साल बाद देखते हो वो रोल्स रॉयस से निकलता है, उसके पास बड़ी जबरदस्त गाड़ी, शान और शौकत से वो निकल रहा होता है, और बड़ी मॉडल किस्म की लड़कियां, कहते हैं ये इसका ये इसमें क्या है जो मुझ में नहीं है. मतलब कि कैसे मतलब मुझे नहीं देते हैं, ये तो उसको तो तमीज में नहीं है इस चीज को, इसकी वैल्यू करने की. तो ये दिल से चीज निकलती है ना सबकी, ये मतलब कैसे वो दिया है, इसको तो कदर भी नहीं है. तो मतलब कि वो ये चीज जो है ये हम सब के अंदर है. ये जो हमारे अंदर से जो हसरत भरी निगाहें होती है ना, और फिर हम बड़े प्यार से ओ नाइस, वेरी नाइस, गुड, यू आर डूइंग वेल इन लाइफ, सो आई एम हैप्पी फॉर यू. नॉट एग्जैक्टली. So it is what it is. This is the world, and so मेरे दिल में अच्छा क्या है कि ये सब बातें जो है हम अपने इनर मोनोलॉग में कहा करते हैं, अपने दिल में कह रहे होते हैं, लेकिन हम इतनी हिम्मत नहीं होती कि बाहर में. मैंने कहा कि यार इन बातों को बाहर लेके आओ. तो जब लोगों ने ये चीजें सुनी, उन्होंने कहा यार ये तो मेरी दिल की बात है. नहीं, बट आपके गानों में रहा है दिल की बात. Like I'll tell you one thing. Sometimes when I'm very confused with what I want to eat, which is like a usual thing, कि रात को डिनर में क्या खाना है, I feel like my husband is going to say कि कोई फैसला तो कभी तुम गले लगा लो.
सही है. अच्छा. देखिए आपके गानों में मतलब है वो. क्या बात है. Reality एकदम. हाँ, absolutely. मतलब कि you see the point of the matter is कि at the end of the day हम गिले शिकवे तो करते हैं ना ऊपर वाले से. जी बिल्कुल. कि तूने खुद ही कहा है देता हूँ जो मांगता है, कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में लगा है, अब तो लिफ्ट दे देना, खुदा के पास तो लिफ्ट करते हैं. Amazing, amazing. अब जैसे कि अब कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो जो नहीं कहा है, अबे कमबख्त, कभी तो समझ भी जाओ. You know, it's like that. You know, कभी तो वो एक खुन्नस निकल रही है यार. For God's sake, try to understand what I'm trying to say. Has this song been used on your wife? No. This was created. No. I mean, like now, has it ever used on your wife? मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है. वो मेरे मुंह से निकलने से पहले ही वो सब चीजें पूरी हो जाती है. कैमरा ऑफ है अदनान. कैमरा ऑफ है. हाँ आप बताइए क्या कहना चाहते हैं. I have to say it all the time. Yeah. I tell you. Oh no, I'm so sorry. पूछो मत यार. Please. तकलीफ. हाँ तो मैं कह रहा था कि it's like incredible. Supreme. Okay, I'm going to move on to this one song. It's so difficult to decide what is my favorite Adnan Sami song. But इसीलिए मैंने अपने introduction में ये कहा था, there's Adnan Sami for every mood, every emotion in your life, and I think I'm so grateful, and I'm so grateful on behalf of everyone. I would say that, and I'm sure people would agree. I'm grateful to God for giving me that ability. Before I move on to this track, which is तेरा चेहरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये आपकी दिल की तमन्ना थी कि रानी मुखर्जी, रवीना टंडन, क्या फिर भूमिका चावला, मीशा पटेल, who all have you romanced? बिल्कुल थी. इन सब के साथ थी. जी. उनको था आपके साथ काम करना कि आपको? खुदा झूठ ना बुलवाए, उनको भी था. अच्छा. But how did this pattern start? I mean, I was actually very, very lucky. I love how you said खुदा झूठ ना बुलाए, उनको भी था. You see, the point is that, honestly speaking, of course, when you write a song, when you create a song, you have a vision. Yeah. And for example, in Tera Chehra, जब इस गाने की visualization के ऊपर हम बैठे, and I like to be part of the whole process of the creativity. I don't think there was ever a doubt in anybody's mind the moment we said that, let's look at the possibility of Rani Mukherjee. And we also, the whole idea was also to try and portray her look-wise in a slightly different way than... Maza to usme aata hai ki she looks different and she looks stunning. She was wearing red. Yeah, she was wearing red in one, and she had a very different kind of makeup. She was looking absolutely amazing. And it was wonderful because she's an incredible artist. I mean, she's a great actor. And the kind of emotions that this song needed, frankly, only she was able to pull off. Right. I mean, and she of course, she exceeded all our expectations. She was brilliant, and she was wonderful to work with, and she's an amazing person. And that goes with everybody whom we worked with. I mean, we were definitely wanting to work with all the various people that we got in. And it was great that they accepted doing it because, at that time, nobody had done this before. But to have top actors coming in and being part of the music video, it hadn't been done before, and it was wonderful for them to do that. And you see, in the process, they played a very important part in elevating the bar of what impact a music video can have if you have great performance. Yeah. As opposed to just having, with all due respect, people who are good looking but don't have the ability to emote. Right. And that's where the art and the skill and the craft comes in, which they brought onto the table, which was just magnificent. Speaking particularly about this song, and I have to tell you this, that you are the master not just of composing music, but the beats that you put in every track has got such a different feel to it. अगर हम खास तौर से तेरा चेहरा की बात करें, और when we move on to even चोरी चोरी from Lucky No Time for Love with you going but इस गाने में खूबसूरती उस साइलेंस में है जब आप उस धुन को रोकते हो और फिर गाते हो. I'm not sure if I'm able to explain it as much as I've enjoyed listening to it, but there's that silence that comes in. That you see, I always say
सुर जो है वो 7 होते हैं जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि 8 होते हैं 8वां सुर जो है वो साइलेंस है ओह you know ये कह दिया आपने यही मैं कहना चाहती थी आपने बस मतलब क्योंकि उसमें जो इम्पैक्ट आता है ना वो जो खालीपन में जो वैक्यूम जो आता है उसका जो एक आपका जो इम्पैक्ट आता है ना right. that has its own musical impact Yeah. which is something that you cannot even explain कि वो क्या था लेकिन वो एक तरह की कशिश है एक तरह का नशा है जो वो लाता है and I love to play with that at times I love to bring in the offbeat suddenly sort of take you off guard right. True. because I mean yes, it's great to have that one pulse that is going on, etc. But it's sometimes nice to just break it off because then that immediately sort of disrupts your entire rhythm. Yeah. And sometimes it does it in a good way, And so, I like to play with that. And so I'm glad that you felt that. I also feel that you also give equal importance to every instrument. Like the guitar is so beautiful in it. There's percussions that are playing beautifully. Everything comes together and just creates that magic. मेरे ख्याल में उसकी वजह ये है क्योंकि I'm a musician first. Yeah. I mean, I first consider myself a pianist. Then I consider myself a music composer. And then I consider myself a singer. So therefore, जो मेरे लिए जो अहमियत म्यूजिक और म्यूजिशियंस की है और उनके इंस्ट्रूमेंट्स की है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आई डोंट जस्ट वांट टू हैव एन इंस्ट्रूमेंट या शामिल बाजा रख दो इट्स लाइक नो इफ आई एम हैविंग अ गिटार देयर it needs to justify why it's there. Right. And even if it means for 2 bars. There's one string that I can hear. I want that guitar to come out and let you know कि मैं इसलिए इधर हूँ. मैं वैसे ही जगह को भर नहीं रहा हूँ मेरा काम ये है अब आपने ये समझ लिया अब मैं वापस चला जाता हूँ अपनी जगह पे You understand what I'm saying? Wow. So that is what the point is. Not कि आपने डाल दिया और आपने उसको बोला कि नहीं तुम पीछे ही रहना अगले बंदा जो सुन रहा है उसको एक कलेक्टिव आवाज आ रही है उसको ये नहीं पता कि यार वो बंदा वहां पे गिटार क्या बजा रहा है वो हाँ ठीक है भर गया है लेकिन वो बजा क्या रहा है तो चाहे वो 4 सेकंड के लिए क्यों ना हो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए कि भाई ये मैं करता हूँ मैं ये मेरा रोल है इस गाने में और ये मैंने आपको दिखा दिया अब मैं वापस जाके मैं वो बजाऊंगा and so that is what my purpose is and that's where I do that I try to do that with any instrument that comes in the place even I do it with the rhythms also अब for example आप वो चोरी चोरी की बात कर रहे थे अब उसमें उसका जो रिदम पैटर्न मैंने बनाया था उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने क्या किया कि मैं सबसे पहले तो मैंने उसका जो कायदा था वो मैंने धीमे धीमे तकिन कताक दिने तकिन धीमे धीमे तकिन कता तकिन धीमे धीमे तकिन कताक दिने तकिन धीमे धीमे तकिन कता तकिन फिर उसका गिटार आता है वो तो एक चीज जो है ना वो इंट्रोड्यूस होती है and then the vocal comes in. So the whole idea was to just highlight कि भाई ये इसका जो हर एक गाने का एक USB होता है इसमें रिदम का एक खास तौर पे एक खास जगह थी तो I wanted to highlight that and so therefore everybody today who talks about for example Chori Chori they will turn around and they'll say that song that's what I wanted Lovely so let's get back to that beautiful माहौल चेहरे पर एक खूबसूरत सा गाना आता है सुनते हैं इस गाने को आसमां झुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आए ओ तेरा चेहरा जब नजर आए ये ज़मीन रुक जाए आसमां झुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आए ओ तेरा चेहरा जब नजर
क्या कर रहे हैं आप? Oh मैंने my कहा ना। God! It's becoming so difficult for me to concentrate. This is beautiful. आज वैसे मेरा गला खराब है। अरे ये तो सुनना ही ये तो सुनना बड़ा जरूरी होता है। ये तो सुनना ये तो सुनना जरूरी होता है। ये बड़ा जरूरी होता है। I don't think I've ever had an interview where the artist has not said that हाँ जिस तरह गला। लेकिन देखो मतलब कि मेरा तो जेन्युइन है ना। अच्छा, क्योंकि आपने क्योंकि गला खराब की बात की, ये बताएं, हमारे एक इंटरव्यू में शायद आपने कहा था, प्लीज रिमाइंड मी इफ आई एम रॉन्ग, इज इट ट्रू कि साथिया का जब गाना बन रहा था उड़ी उड़ी, आपका गला वाकई में खराब था? Yeah, that's true, absolutely. I remember. Well done. Actually, I had gone to Chennai. अचानक जब मैं वहाँ पे शाम को लैंड हुआ तो there was a quick change in weather जो मेरे नाजुक मिजाज गले को लग गया और लग गया। तो बस उसके बाद फिर मैं बस बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई थी। तो हाँ बिल्कुल, तो मैंने फिर I spoke to Rahman on the phone. I said, listen, I think my voice is not doing well. I've got a bit of a congestion in my throat and lungs and all that. तो उन्होंने कहा कि you know, why don't you just come over and we'll just jam, and अगर आज नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, okay fine. So I mean, so we met up that evening. Okay. And वहाँ पर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं माइक के सामने वैसे ही ऐਵੇਂ ही चला जाता हूँ, you know, that kind of a space. So I just started singing it, and you know, Rahman was there, and Shad Ali was the director of Satya, the movie, was there. And both of them turned around and said that, you know, this is sounding absolutely fantastic. And मैं तो लियो हूँ, मुझे जब लियो को अगर आपको तारीफ की जाती है तो वो तो आसमान पे चढ़ जाता है। उन्होंने कहा अच्छा तो और करो, तो मैंने फिर वो कर दिया जोश में। अब वो जो टेक्सचर आपको सुनने को मिलता है एज अ रिकॉर्डिंग, it is actually because, you know, that whole hey udi 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 hey, ये actually मेरी आवाज उस वक्त ऐसी ही थी। I was not trying to be sexy, you know, it was just the way it was, you know. वो जो texture था वो naturally आ रहा था because of the fact that my voice was actually in a pretty bad state. But still, it has so many high notes. How did you manage that? I just वो हो गया, you know, I mean, it just happened. So now अच्छा लोगों ने जब उसको सुना, people loved it and so on and so forth, it was wonderful. लेकिन अब मुसीबत मेरे लिए ये आ जाती है कि अब जब मैं स्टेज पे गाता हूँ तो I have to now create that voice, वरना अगर मैं उसको वो इम्पैक्ट नहीं है ना उसका, you know, so I have to then create that. तो उसमें काफी खराश जो है वो मुझे बनानी पड़ती है as opposed to that time जो naturally निकल रही थी। एक एग्जांपल दे दो। उड़ी 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 खाबों की पूरी अंग रंग घेरी सारी रात हो रही। Wow. So, you know, wow. So I have to create it, you know, as opposed तो उस वक्त का जो माहौल था वो आपको रिक्रिएट मुझे रिक्रिएट करना पड़ता है, you know, उस वक्त जब मैंने बनाया था तो उस वक्त तो it was coming out naturally, आवाज ही ऐसी थी। But you know, such is life. Sometimes we have these what you call wonderful accidents. I think you're a performer. Yeah, I am. You agree that, like, you know, which is why it really helps, because you can take any you can mold into anything. Yeah. So, I mean, the thing is, I've grown up so much on stage. Ji. I've done so much of stuff on stage. Now, for example, even today, I like to do everything live. I like to do when I perform. I always perform live. Everything is live because I feel that जो आपको इम्पैक्ट लाइव में मिलता है, जो ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन जो आपको मिलता है, वो कभी भी प्री रिकॉर्डेड चीज़ से आपको कभी नहीं मिलेगा, you know. I mean, you'll get the beats, you'll get all that, but you will never get that impact. Correct. That you get, the soul comes out when it's live. So that's why the whole element of performance is sort of ingrained in my system, because I've been performing since I was very young, you know. So I enjoy performing. And तालीम कितनी important रही है आपके लिए? Very important. क्योंकि आपने बहुत सारे दिग्गजों से तालीम ली है. Some of them we have seen
in your house and, on the walls? You see, it's very interesting क्योंकि I don't come from a musical family or even the entertainment family whatsoever. मेरा जो खानदान है उनका कोई ताल्लुक entertainment से जुड़ा दूर दूर से नहीं है. My father was my grandfather was from Afghanistan. My great grandfather was from Afghanistan. He was governor of 4 provinces from there. We belonged to King Amanullah Khan's family. And then my father became, he was short for a brief period. He was in the Air Force, and then after that he was a diplomat, and he was ambassador to 14 countries. तो उन्होंने जब देखा कि भाई इसका तो ध्यान इस तरफ है, तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा सीधा उन्होंने कहा, listen, I love what you do, I love your music, and I'm going to support you, but I don't know anything about this business. So for my sake, so I can't guide you, and neither can I, push you in any direction. I don't know anybody. So all I can just say is that, look, I'll support you in your passion, but just get yourself a solid education, because all I've heard is कि ये बड़ा मुश्किल profession है और बहुत कम लोग इसमें कामयाब होते. तो अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता अगर तुम कामयाब नहीं होते तो you should have a backup profession. But I'll support you. तो ये एक हमारे बीच में एक understanding हुई. तो मैंने फिर उन्होंने मुझे, he sent me to the best of education in England and everywhere, and I became a lawyer, and then I became a barrister from England, and but then I said कि music is my calling, and he said, okay, now that you've done your education, do whatever you want, pursue your passion. And so I did, and here I am. Thank God. I think we should take a moment to appreciate parents such as yours, and to all those who are watching us and are supporting their kids in whatever they want to do. This is so important. I will say one thing. Even if you are a musician, no matter what profession you may be in, I think education, मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई जो मर्जी आप करो, get yourself an education. क्योंकि क्या है कि education जो है वो आपके दिमाग को खोलती है. बिल्कुल. आपके horizons को बढ़ाती है, मतलब कि it gives you a far greater insight towards the world, and it will help you in your profession as well. True. True. And so today I really feel that the education that I had while growing up has played an enormous role in my life today from every aspect. So I would always encourage parents to encourage their kids' passion. And I would tell the kids to also complete their education, and because it's equally important, So that's one of my gyans. Tell us about your transformation journey. Oh gosh. मैं तो ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट पे जो फोटो है, उससे आपको पहचाना जाता है कि? यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है. अब तो खैर मेरे पासपोर्ट्स के और जो आधार कार्ड्स हैं उन सब के फ़ोटोग्राफ्स जो हैं अब करंट हो गए हैं, लेकिन उससे पहले जो फ़ोटोग्राफ्स थी उसमें मुझे ख़ासी तकलीफ़ कभी कभी होती थी कि इमिग्रेशन में फ़ोटो पासपोर्ट में एक और शख्स की देखते थे, फिर मेरी तरफ देखते थे, वो कहते थे कि ये तो no, it's not. I remember a few years ago I was entering the US and they had a problem. और वो अक्सर ज़्यादा पैरानॉइड से होते हैं, तो उनको मुझे बाकायदा गूगल में जाकर दिखाना पड़ा कि look, I am the same person. Look, there are all these articles about me about having lost weight. So then when they saw the before, after and all that, they said, yeah, it's the same guy. But losing 130 kgs at one stretch in the year 2006, how did you manage that? Was that a conscious effort? I mean, of course, it was a conscious effort. लेकिन आप जब 230 किलो होते हो ना, उस वक्त आप ये तस्वीर भी नहीं कर सकते कि भाई हाँ भाई मैं तो मेरी चाय को रखना मैं तो 130 किलो कम करके आता हूँ. You never do that. You have no idea how much you will actually lose, because देखिए हकीकत ये है कि उससे पहले मैंने बहुत कोशिश की थी वेट लूज करने की, लेकिन नहीं हो पाया. किसी न किसी वजह से शायद मेरी डिटर्मिनेशन शायद उतनी स्ट्रांग नहीं थी.
कि कभी कभी 10 किलो कम हो जाता था, कभी 5 किलो हो जाता था, फिर उसके बाद मैं चीटिंग शुरू कर देता था और व्हाटएवर। तो इसलिए मैं ये कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि मैं वाकई इतना वजन कम कर पाऊंगा कि नहीं। तो आई हैड टू जस्ट टेक बेबी स्टेप्स, टेक इट एज इट केम, एंड करते 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 अचानक आई मीन जब पूरी चीज़ को जब आपने उसका इम्पैक्ट देखा तो देखा कि भाई अल्टीमेटली 130 किलो मैंने कम कर दिए। So it was a process. It wasn't like you went cold turkey and no. I mean, I had to go cold turkey in the sense, I mean, I had to follow a very strict diet. Okay. I mean, I was no bread, no rice, no sugar, no oil, no alcohol. I mean, it was all out of my diet. I could have high protein. I could have as much, boiled meat and all those vegetables which were on the protein side. I could have dal and so on and so forth. But none of these things I could have. Okay. So it was not easy, but it was a question of just adapting yourself to a new lifestyle, and luckily I managed to keep it going. जिसकी वजह से 130 हुआ, वरना मैंने कभी उस तरह से प्लान नहीं किया था। Correct. और मुझे खुद, अगर आप मुझे उस वक्त कहते कि भाई 130 किलो कम करना है आपने, तो मैं कहता कि सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि आप कभी भी इस चीज़ को कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी मैंने 30 किलो कम करना है, मैंने 10 किलो कम करना है, भाई मैं 5 किलो मुझे कम करने, उनके टारगेट्स होते हैं। मेरे लिए तो पहाड़ था। तो मैंने कहा कि यार इससे पहले कि मैं अपना टारगेट दूं, जिसको मैं देखूंगा, अगर मैं बोलूंगा कि भाई अभी मुझे 130 किलो कम करने या 50 किलो 150 करने या जो भी, अगर मैं उसको दिमाग में रख लूंगा तो मैं तो वहीं पे गिर जाऊंगा। मैं सोचूंगा कि ये नामुमकिन होगा। मैं तो सोच रहा हूँ आपका वार्डरोब पे कितना चेंज हुआ होगा। Of course, completely. My waist used to be 81. Can you imagine? Wow. 81. मैं आज भी देखता हूँ अपने वो उन पुरानी चीजों को, wow. Do you have them? एक तो मुझे सुवेनियर के तौर पे रखना बनता है ना। So I mean, so the point is that I just said to myself कि let's just go step by step. अभी टारगेट बनाओ 10 किलो का, and then try another 10 kilos, फिर ये भी था कि let's get out of the 200 zone and come into the 100 zone. Wow. But you keep having these transformations. Quite recently, we saw another one where your photo was all over swimming pool ka photo, and everybody's like, "Who is this person? This is not Adnan Sami." You see, the thing is, weight is a yo-yo. It's never like this. Yeah. So suddenly you lose a little bit of weight, then you put on a little bit of weight, then you lose. It's never a consistent. It's not a straight line. So this constantly happens. तो इस तरह से ये चीज़ें होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी, तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लाइफ। कुछ लोग होते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में, कम वक्त लोग, कौन है ये जो नेगेटिव पीपल, गंदे किस्म के लोग, डोंट लाइक दिस नेगेटिव जो मतलब कि पूरा घोड़ा खा जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, व्हाटएवर whatever. So the point is कि उस तरह के बड़े गंदे किस्म के लोग हैं जिंदगी में, तो उनका कुछ भी नहीं होता। वो चाहे पूरा हाथी क्यों ना खा ले, उनका कुछ नहीं होने वाला। और कुछ लोग होते हैं जिसे पंजाबी कहते हैं कि 8:30 से क्यों भी पानी है। So for them, for some people, even a little bit of extra oil or whatever will have an impact on them. Yeah. So and people, for example, me, I was already told that listen, you're always going to have this issue. Right. So you're gonna go up some, you're gonna go down, you're gonna go up, you're gonna go down. So I mean, it's part of my life. So I've learned to live with it. So are you maintaining a diet or something like that? तो मेरा अब you see now I have gone into a zone जहाँ पे मैं अपने आप को किसी चीज़ से डिप्राइव नहीं करता, लेकिन मैं उस तरह से लूट भी नहीं मचाता, इन द सेंस कि मैं चखूंगा सब चीज़ों को लेकिन उनके ऊपर टूट नहीं पड़ूंगा। पहले ये होता था कि बिरयानी आती थी तो मैं उसकी देग तक मैं चाट लेता था, उसको खाली कर देता था। अब क्या है कि मैं 2 नवाले खा के मैं कहता यार अच्छी है, कहीं नहीं जाएगी, कल दोबारा भी खा सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएगी, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, यू सी क्या है कि one thing that you cannot do, you cannot change your taste buds. Correct. अब इनको अगर ज़ौक चढ़ गया है तो अब क्या करें? Correct. अगर फिरनी या रबड़ी पसंद आ गई है, अब
उनका मतलब कि ज़बान का क्या कसूर है? Correct. अब आप ज़बान को ये तो नहीं कह सकते कि एक काम कर, ये रबड़ी जो है स्किम मिल्क वाली खा ले। वो रबड़ी नहीं होगी ना, तो बेहतर ये है कि इसके बजाय कि आप पूरी डिश खाली कर लो रबड़ी की, आप एक चम्मच खा के अपने इसको सेटिस्फाई कर लो और बोलना कि बेटा कल दोबारा खा लेना एक और स्पून, ये कहीं नहीं जा रही। एंड दैट्स अ फैक्ट, एट द एंड ऑफ द डे it's all a question of your mindset, you know. So I try to keep that balance, and you know. Well, you're doing wonders. You're doing wonders. I feel like every time I meet you, you're a whole different person, and it's so nice that you keep reinventing yourself. Yeah, I think it's. I think reinvention is a very important part of evolving. Yeah. You know, because I think it is very important to keep. It keeps you fresh in your mindset also. And it also allows you to explore and discover new things about yourself. Rather than getting stuck into one particular mold and just staying there, I find that would be very boring. Right. So I like to keep it unpredictable, evolving, reinvention. I think that's brilliant. We're coming to 2005, jahan I have told this to you 10,000 times, but I'm going to say this again. One of my favorite albums of Adnan Sami is Lucky No Time for Love. Right. Wow. एक album जिसमें उदित नारायण, सोनू निगम, लता मंगेशकर जी, आप खुद हैं. Also Asha ji is there in the film with Lucky Lips. लेकिन moving to this track, and it's important because we're also remembering Lata Didi. Yes. कैसा रहा आपके लिए sharing a song with her? जिसे कहते हैं ना, part of my bucket list. Yeah. It was part of my dreams, which I will cherish for as long as I live. I think it's one of the most memorable moments of my life, because you know, I mean, undoubtedly the impact that she's had on me, on my family, just like millions of other people all around the world and throughout the decades. For me to have the opportunity to sing and compose for her was a dream come true. And she was the most incredible person to work with. और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है अपने करियर में. And I'm very happy that it was for such a, you know, romantic song. It was and she sang it so beautifully. And the memory that I have of that moment in my life when I recorded her is one of the very special moments of my highlights of my career and my life. So were you nervous? Yes, I was. I mean, I will be very honest in saying that I was, because, you know, I mean, for the first time, I'm going to be recording with Lata Mangeshkar, you know, and you know, she was such an incredible person. I mean, she knew she was Lata Mangeshkar. I mean, but she also knew that the impact that had on me, and she went out of her way to calm me down. And, you know, this is the great thing about these incredible, enormous legends like Lata ji, like Asha ji, like Amit ji. I mean, they know exactly the impact that they've had on culture. You know, it's not just one aspect, but it's the culture, which is far greater than just one area of life. They've been part of defining a certain kind of popular culture. And they know that they have had that impact, and they know what they mean to those who are coming into who are their juniors, you know. And so, but then they also know that we need to work with them, and we need to make them feel comfortable. This is one thing that I learned from them, was how to make the other person comfortable, despite knowing, I mean, you know, if any of them wanted, they could have come with those airs and I'm so and so, but they didn't. They were like very, very, you know, very, you know, grounded. And you know, I have found that whoever is actually very confident of who they are, they will always be grounded. Those who are not confident of who they are, they're insecure. And then they feel the need to impose upon somebody that, look, I am so-and-so. Those who know who they are and they're secure and they're comfortable in their skin and they don't need to prove anything, they're calm as a cucumber.
Very true. And that is something that I saw in them. And it was incredible working with such people, because there was just, for me, it was just the ultimate educational experience working with them, learning how they do their craft. How do they psych themselves up? How do they conduct themselves during that period? How do they listen? How do they surrender themselves? Correct. You know, these are things that I learned from all of them. And it was it's something that I will take with me, and I take with me everywhere I go, and I feel very blessed. Wonderful. What an album. I have to tell you this. Thank you. I'm so glad that, we've had an album like this while we have enjoyed music from all possible ways. अगर इस album में से कोई एक गाना जो आप हमें सुनाना चाहे. एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है, बेताबियों में धड़कन मेरी चैन पाए, शायद यही तो प्यार है, शायद यही तो प्यार है. God bless her. Magic. This is truly magical. Thank you very much. In the year 2006, एक film आती है सलामे इश्क. Right. And again, you have these things that you did in this song that are the most important. क्योंकि हम भी जब इस गाने को गाते तो हम भी कहना चाहते that's right. ये कहाँ से निकला है? Was it scripted? No, it wasn't. Like where did this come from? इस तरह की हरकतें मैं अक्सर किया करता हूँ, जिसके बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैंने क्यों किया. I don't think I can do it like you do it. Can you do it once? That's right. Ooh. I'm like, what is पता नहीं, मतलब कि वो पता नहीं, मैं I actually don't know कि अच्छा कभी-कभी तो क्या होता है, like for example even with the we were talking a while ago about the Satya song. Yeah. Udi Udi में I was rehearsing, I was jamming. He had recorded it. He said, listen to this, it's sounding good. मैंने कहा तुमने रिकॉर्ड कर लिया? He said, yeah. Okay. कभी-कभी आप अपने गले को ठीक कर रहे होते हैं, and you're just getting into the mood of it, and you're just doing these weird noises. वाह, मतलब आपकी आवाज से वो हरकत. बस मैं क्या बोलूं, बस हूँ ही ऐसा. मतलब ये रिहर्स में भी हरकत निकल आई. बस मैं क्या करूं, मेरी रग में हरकत है. I really think we need to listen to this track. सीरी तपती रातों में ढलता हूँ मैं बरसातों में, डूबा हर पल यादों में, दिल क्या करे हो, अपने में खोए रहता हूँ, कहना ही कुछ कहता हूँ, दिल क्या करे, बातों में सलामे इश्क, सलामे इश्क. No, there is salame. Salame. That's right. Amazing. Oh my God. मतलब क्या बात है? You have to be so careful now when you go into a recording studio. अच्छा, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा. हाँ, I mean sometimes ये चीज जो ये candid जब कैप्चर होती है ना, तो वो उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है, क्योंकि आपने उसको प्लान नहीं किया. अब कभी-कभी अब कई लोगों ने इन चीजों को नोट किया, तो वो कहते हैं आप जरा अपना जो जोश है ना उसको जरा दिखाइएगा. लेकिन यार ये क्या बातें कर रहा है, जोश अपना दिखाइएगा, मतलब कि what is that? Oh God. So I then say, listen Jack, it doesn't work like that. These are things that just happen. Right. You don't sort of turn around and say, that's right. It can't be choreographed. No, it can't be choreographed. It has to be just... So it has to happen. It'll happen in the most odd places also. Yeah. It'll happen in places where you won't expect it. So coming to the end of our session with a track that we've been speaking about, in fact, since the start, which is Bajrangi Bhaijaan ka gaana, Bhar to Jholi. Yeah. आपने कहा कि this was the only film जिसमें आपने you said yes to coming on screen and doing a qawwali. Yes, I mean जैसे मैंने कहा कि मैंने कभी फिल्म के गाने में अपने आप को उसी फिल्म में पिक्चराइज कभी नहीं किया. यहाँ पर मैंने पहली मर्तबा वो बात
तोड़ी वो इसलिए पहली बात तो ये कि सलमान asked me to be part of it and you know he's like family and there's no way I would say no to him. पर ऐसा लग रहा था कि in the screen आप लोग वाकई में गा रहे थे, were there musicians? You see the thing is कि on the screen पहली बात तो ये कि वो जो सब जो मेरे जो साथ में जो बैठे हुए थे वो actual musicians थे. They were not actors. And secondly, even though we had a playback, of course, because that's what we do in films, I actually sang it live. Okay. I mean, and we never shot it जो एक typical तरीका होता है फिल्म को गाने का शूट करने का कि आपने 2 जुमले इस एंगल से आपने रिकॉर्ड किए और उसके बाद आपने कट किया, दूसरा एंगल लिया, 2 जुमले यहाँ से किए. हमने एक एंगल जो था पूरी कवाली को हमने फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश हमने शूट किया. तो उसमें एक मोमेंटम और एक कंटिन्यूटी रही और फिर आई वाज एबल टू सिंग इट. Even though that live singing was not getting recorded, but I sang it. So you were able to get my expressions exactly what they were. Right. And you would see a bit of strain on the throat and so on and so forth. And that was, I think, what created a certain impact. And of course, the musicians who were part of it, they really got into it. Yeah. I mean, you know, they really, I mean, उनमें से कई लोगों को तो hall से वो, they even went, you know, they went into a trance and a couple of them even fainted. So were there people, like there were audience who were watching your... Yes, they were, and they were all real people. And that created an impact which was phenomenal. So how about we end this beautiful musical session, this Qawwali. तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे ऐ नबी तू बुलाता है तेरे दर पर सर छुपाए मैं भी आया हूँ जिसकी बिगड़ी है नबी चाहे तू बनाता है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली ओ भर दो झोली आका जी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली. You're an inspiration to so many people, singers, non-singers, aspiring singers. It's amazing. Thank you very much. And I wish you all the best for Thank you. everything that you are coming up with, all your future projects. Thank you so much. My pleasure. And it was so wonderful to see you. Lovely and hope to meeting see you us. soon, inshallah. Thank you so much. Okay. Adnan Sami हमारे साथ. Thank you so much guys for watching me. My name is Urmin and y'all were with us on Hungama. Hi, मैं हूं अदनान सामी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा.